Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. In this lecture, we'll take a deep dive into the world of Harper Lee, one of the most remarkable voices in modern American literature. We'll explore her life, her major works, and her literary style, and then move into a detailed discussion of her timeless classic, To Kill a Mockingbird. Together, we'll uncover the novel's plot, themes, characters, symbols, and also learn how to write effective exam oriented answers for previous year questions. By the end of the session, you will not only understand the novel's message of justice, empathy, and moral courage, but also be ready to express your ideas with clarity and confidence in your own writing. So stay tuned till the end. And if you enjoy thoughtful discussions on literature, then don't forget to like this video, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel for more authentic literary lectures and answer writing strategies. So let's begin the lecture. So Harper Lee, she is one of the most influential voices in modern American literature. Although she wrote only a few works, Harper Lee's contribution to the world literature, especially through her masterpiece To Kill a Mockingbird, remains timeless. Her writing reflects moral courage, social awareness, and the struggle for human dignity in a world divided by prejudice and inequality. So her full name is Nellie Nell Harper Lee. Was born on 28th April 1926 in Monroeville, Alabama, a small town that became the model of Maycomb in To Kill a Mockingbird. Her father, Amasa Coleman Lee, was a lawyer, legislator, and a part-time newspaper editor. Much like Atticus Finch, the moral hero of her novel. Her mother, Frances Cunningham Finch Lee, she was from a prominent local family. From childhood, Harper Lee was deeply observant, independent, and interested in human behavior and justice. She was also a child. She was also has a childhood friend of uh, Truman Capote, another future literary icon who later became the model of the character Dill in To Kill a Mockingbird. There is a character Dill who is actually inspired from his childhood friend, from her childhood friend Truman Capote. So Lee studied at the law. She studied the law at the University of Alabama, but just before completing her degree, she left to pursue writing in New York. There, she worked as an airline reservation clerk while writing fiction in her spare time. In 1956, a group of friends gave her a year's financial support to write full time, a gift that resulted in To Kill a Mockingbird. तो टू किल अ मॉकिंग लिखने के लिए इनको काफ़ी समय की ज़रूरत थी, तो इनके फ्रेंड्स ने इनको 1 साल तक फाइनेंशियल सपोर्ट किया, और इसी की वजह से रिज़ल्ट ये आया कि टू किल अ मॉकिंग जैसा मास्टरपीस इन्होंने लिखा. So let's talk about her major works. So the first is To Kill a Mockingbird, which was published in 1960, July 1960. It got published. The novel became an instant success. It won the Pulitzer Prize for Fiction in 1961. 1961 में इस novel को Pulitzer Prize भी मिला था, and earning Harper Lee international acclaim. So this novel, set in fictional town of Macomb, Alabama, during the Great Depression of 1930s. The novel is translated by Scout Finch. She is a young girl who recounts her childhood experiences. The story revolves around her father, Atticus Finch, a lawyer who defends a black man, Tom Robinson, who is actually falsely accused of raping a white woman, Mayla Ewell. Through the eyes of children, Scout and her brother Jem, Lee explores racism, moral consciousness, moral conscious innocence, and social injustice in South America.
So, while the trial forms the center of the novel, the story is about growing up, empathy, and moral education, which symbolized through Atticus' lesson to Scout. So, you never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around it. You can read these lines in the novel. So this novel, To Kill a Mockingbird, has represents some of the themes like racial injustice and prejudice, moral courage and conscience, loss of innocence, that is Bildung's Roman theme, and compassion and empathy, class and gender inequality, and the coexistence of good and evil in nature. So Mockingbird represents the innocence and goodness, being who do no harm but suffer because of others' cruelty. Both Tom Robinson and Boo Radley, they symbolize the mockingbird spirit, pure souls victimized by social bias. So इस नॉवल में एक बहुत ही फेमस लाइन है, इट्स अ सिन टू किल अ मॉकिंग बर्ड. तो आप जब ये नॉवल पढ़ेंगे तो आपको ये भी जानने को मिलेगा. द नेक्स्ट मास्टर पीस इज Go Set a Watchman, and it was published in 2015. Though written before To Kill a Mockingbird, it was published in 2015. It serves as a companion novel showing an adult scout. The main character, Jean Louis Finch. Now she is an adult character in this novel and returning to Maycomb. So you can say that this novel is sequel to this one, right? So the character adult Jean Louis Scout returning to Maycomb and confronting the reality that her father Atticus is not the flawless hero she once believed him to be. So the book sparked controversy for its portrayal of Atticus as holding segregationist views, yet it provides deep insight into the tension of Southern identity and racial politics during the civil rights era. So the title comes from Isaiah, for thus hath the Lord said unto me, for go set a watchman. ये वहाँ से लिया गया. Let him declare what he seeth. So let's talk about her contributions to Truman's Capote in Cold Blood. तो ये मैंने आपको पहले बताया, ये इनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे ट्रूमैन कैपोट. तो उन्होंने एक उनका ये काम है कोल्ड ब्लड. तो इसमें हार्पर ली का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है. एक्चुअली शी असिस्टेड हर फ्रेंड ट्रूमैन कैपोट इन रिसर्चिंग हिज नॉन फिक्शन मास्टरपीस इन कोल्ड ब्लड. ये नाम है पूरा, इन कोल्ड ब्लड नॉवल का नाम है ये. तो हार्पर ली असिस्टेड Truman Capote in searching his non-fiction masterpiece In Cold Blood in 1966 about the murder of the Kansas family. Her meticulous note-taking and empathy for the locals greatly contributed to the work's depth and authenticity. Although she never sought public credit, this collaboration further shows her literary discipline and ethical sensitivity. Right? Now let's talk about the themes and concerns about Harper Lee's writings. So, Harper Lee's fiction, though limited in volume, offers profound insights of human nature, justice, and moral responsibility. So, the first thing we can see in her work, that is racial injustice and prejudice. So, Harper Lee grew up in the segregated South, where racial discrimination was institutionalized, right? So through the novel, this novel, To Kill a Mockingbird, she Harper Lee condemns the hypocrisy of a society that claims to value justice while practicing bigotry. The second theme is moral integrity and conscience. So moral integrity and conscience. So Atticus Finch stands as a moral archetype, a man guided by ethics, not popularity. So happily believe that true courage is standing up for what is right, and even when you know you will lose. So real courage is there's a line in the novel. Real courage is when you know you are licked before you begin, but you begin anyway and see it through no matter what, right?
So the third theme is childhood and innocence. So by using the character of Jean Scout as the narrator, Harper Lee captures the purity of a child's perspective to reveal adult corruption. Her narrative voice is both innocent and insightful, showing her moral awareness evolves. The fourth theme is empathy and understanding, right? So, Harper Lee's central moral teaching is empathy, the ability. What is empathy? Empathy is the ability to feel what others feel, right? And her characters learns the justice which can't exist without compassion, right? So Harper Lee's writing is clear, compassionate, and deeply human, blending realism, symbolism, and Southern oral tradition. So let's break down her major stylistic traits. The first is Southern Gothic tradition. So अगर हम इनकी नॉवल की बात करें, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, दिस नॉवल शेयर्स फीचर ऑफ सदर्न गॉथिक फिक्शन. लाइक क्या सेटिंग है, जैसे उसकी जो नॉवल है उसका जो सेटिंग है वही काफ़ी ज़्यादा सदर्न गॉथिक ट्रेडिशन के फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि जो नॉवल है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसकी जो सेटिंग है वो काफ़ी स्मॉल टाउन सेटिंग है. सोशल डीके हो गया है वहाँ पे, हिपोक्रेसी है, एसेंट्रिक है, और आइसोलेटेड कैरेक्टर्स है. लाइक बू रेडली, एक कैरेक्टर है इसमें, बू रेडली, वो काफ़ी इसेंट्रिक और आइसोलेटेड कैरेक्टर्स है. हिडन वायलेंस है यहाँ पर, दैट बीनीथ पोलाइट सोसाइटी, मतलब पोलाइट सोसाइटी के साथ साथ यहाँ पर हिडन वायलेंस भी है. सो हेयर वी कैन सी दैट ली यूजेस this tradition not for horror but to expose the moral truths, right? The second literary style is child narration and dramatic irony. जो इस नॉवल की जो नरेटर है, जिनका नाम है जीन स्काउट, जीन लुइसा स्काउट फिंच. सो बेसिकली जब नॉवल शुरू होती है तो उनकी जो उम्र है, जो नरेटर की उम्र है, वो तो 6 साल की है. सो बाय यूजिंग दिस चाइल्ड वॉइस, Harper Lee creates both humor and emotional depth. The reader perceives more than a narrator understands, right? And creating its dramatic irony. So, this duality allows the story to be accessible yet profound, realistic dialogue and dialect. So, Lee perfectly captures Southern speech, rhythms, idioms, and dialects, making her characters authentic. Example for Calpurnia's formal dignity, Scout's colloquial honesty, and Atticus' moral calm. The fourth literary style is symbolism. So the mockingbird is the key symbol that represents innocence, which is destroyed by evil. The mad dog, the camellias, the oak tree gifts also carry moral meanings. The fifth literary style is humor and warmth. So despite heavy themes, Harper Lee's prose contains gentle humor and warmth. Scenes of childhood games, school mishaps, and family conversations create a nostalgic tone and that softens the novel's harsh realities. Simplicity with depth. So Lee's style is deceptively simple. She avoids ornamentation but delivers psychological depth and moral weight. Every sentence is purposeful, balancing emotional appeal with intellectual clarity. So mockingbirds don't do one thing. The mockingbirds don't do one thing but make music for us to enjoy. They don't eat up people's gardens. No, don't nest in corn cribs. They don't do one thing but sing their hearts out for us. So this is all about her literary style. Now we'll discuss Harper Lee's place in American literature. क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने जो भी लिखा है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अफेक्टेड रहा है वो ऑडियंस पे, रीडर्स पर, सोसाइटी पर. So, Harper Lee's To Kill a Mockingbird became not only a literary classic but also a moral text for generations. It's a widely taught in schools for its humanistic values and civil rights relevance, right? It is widely taught in schools, right? So through her work,
Through her work, Harper Lee gave voice to the marginalized and silenced, especially during the turbulent years of the civil rights movement. Her writing helped readers to confront uncomfortable truths about racism, justice, and empathy. Though she remained reclusive after her success and published little else, her single great novel was enough to secure her place alongside Mark Twain, William Faulkner, and Flannery O'Connor in the canon of South American literature. सिर्फ एक या दो मतलब इनके मास्टरपीस रहे हैं, मतलब जो भी इन्होंने लिखा वो मास्टरपीस ही कंसीडर किया गया। और इतना कम लिखने के बाद भी उनको उनकी जो उनको मार्क ट्वेन जैसे बड़े बड़े ऑथर्स नॉवलिस्ट के साथ उन्होंने अपने लिए एक जगह सिक्योर की है। दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल, राइट? So, after the enormous success of To Kill a Mockingbird, Harper Lee withdrew from public life. She lived quietly in her hometown, rarely giving interviews. She was awarded the Presidential Medal of Freedom in 2007. 2007 में इनको ये अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। और एक और अवार्ड मिला था उनको, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स, वो 2010 में मिला था, फॉर हर कंट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर। सो शी पास्ड अवे ऑन February 19, 2016. 9 years पहले she has passed away in Monroeville, Alabama at the age of 89. Her funeral was simple, just as she had lived, but her legacy continues to shine as a symbol of moral clarity and compassion in literature. So Harper Lee's life and works remind us that great literature is not about quantity but the truth, which is the actual quality. So with To Kill a Mockingbird, she achieved what many writers aspire to. She touched the conscience of a nation. Her writing is not revolutionary in language but in moral imagination. Through her eyes, we learn that courage begins in small acts, that justice starts with empathy, and that the truest strength lies in understanding others. So people generally see what they look for and hear what they listen for, right? So Harper Lee's voice remains timeless, gentle yet firm, moral yet compassionate. So reminding us that literature's highest purpose is to make us more human. Now our focus is on the text. Harper Lee's To Kill a Mockingbird. It was published in 1960. It is one of the most important novels of 20th century American literature, right? Which is set in deep south in the 1930s. It deals with the issues of race, class, one second, morality, innocence, and justice. So the novel won the Pulitzer Prize for Fiction in 1961, and the novel has been translated into more than 40 languages. Through the innocent eyes of Scout Finch, Harper Lee presents a profound moral journey in which a small town community's prejudices are exposed, and where compassion, understanding, and courage become moral weapon against injustice. It's not merely a courtroom drama or a story about racism. It's also a coming of age story, a portray of moral education and a critique of social hypocrisy. Now we'll discuss the plot summary of the novel. So the story is divided into two major parts, both narrated by Jean Louise Scout Finch. She is a 6 years old living in Macomb, Alabama during the Great Depression. Right. So
In part 1, this is the setting of the scene. The narrator, Jean Louise Scout Finch, she lives with her father, Atticus Finch, who is a widowed lawyer, and her elder brother, Jeremy, जिसका एक और भी नाम है जेम फिंच के साथ वो रहती है. मतलब ये 3 लोग हैं यहाँ पर. करेक्टर्स भी देखते रहते हैं हम. जीन लुइस स्काउट फिंच, शी इज़ द नरेटर. ये अपने फादर के साथ रहती है. ये इसके फादर हैं और ये इसका ब्रदर है. ठीक है. सो शी लिव्स विद हर फादर एटिकस फिंच, हु इज़ अ विडोड लॉयर, एंड हर एल्डर ब्रदर. ये इसका बड़ा भाई है जेरमी, जिसका नाम जिम है, सॉरी जेम. सो जेम फिंच रहती है. एंड दे आर ब्लैक हाउसकीपर कैलिफोर्निया. ये इनका एक हाउसकीपर है जो कि ब्लैक है. एंड ही हेल्प्स हर फादर टू रेज देम, राइट. सो मेकॉम जो है वो कोई बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, बहुत ही छोटा सा टाउन है. इट्स अ स्मॉल स्लो सदर्न टाउन वेयर नथिंग एवर हैपन्स. But beneath its calm surface lies deep racial and class division. So Scout and Jem, they befriend a character Dill. He is a curious boy who spent summers in Mekong. ये जो डिल कैरेक्टर है ये वही है, डिल हैरिस, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि हार्पर ली का एक बचपन का दोस्त था जिनका नाम था, एक सेकेंड, उनका नाम क्या था. यस, ट्रूमैन कैपोट. तो ये जो कैरेक्टर है डिल, ये इन्हीं से इंस्पायर्ड है, राइट. सो तो ये दोनों जो बच्चे हैं ये भी बहुत छोटी उम्र वाले बच्चे हैं जब नॉवेल शुरू होता है. तो ये दोनों बच्चे, ये सॉरी, जीन लुइस स्काउट फिंच, जीन लुइस स्काउट फिंच और जेरेमी फिंच, ये दोनों जो बच्चे हैं ये दोस्ती कर लेते हैं डिल हैरिस से. सो दे befriend Dill, a curious boy who spent summers in Mekong. The children become fascinated by the recursive neighbor आर्थर बू रेडली. ये जो नाम है, ये इसका पूरा नाम है Arthur Boo Redley, who never leaves his house and is subjects of many local legends. The play, they play games, imagining Boo's life, dare each other to approach his house and find small gifts like gum, soap figures, and pennies left in the note hole of a tree outside of Redley property. That hints that Boo may not be the monster they imagine. So Atticus, their father, teaches his children empathy and fairness, and warned them not to judge others before understanding their situation. He once said to them, "You never really understand a person until you climb into his skin or walk around it in it." So Jean Louise Scout Finch, she faces challenges at school for being literate and for defending her father when other children calls him names for defending a black man. So एक्चुअली इसके फादर ने ना डिफेंड किया एक ब्लैक मैन को जिसका नाम है टॉम रॉबिन्सन, who is actually wrongly accused of raping a white woman, right? So through these early chapters, Harper Lee builds both the innocent childhood world and the moral foundation that will later be tested by society's prejudice. तो ये तो था हमारे प्लॉट का पार्ट 1, राइट. अब पार्ट 2 की बात करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द ट्रायल एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस. सो दिस इज़ अबाउट द टॉम रॉबिन्सन्स केस. सो एटिकस फिंच, who is appointed to defend टॉम रॉबिन्सन, जो एटिकस फिंच जो कि एक एडवोकेट है, तो उनको अपॉइंट किया गया है कि वो टॉम रॉबिन्सन जो कि एक ब्लैक मैन है जिसको झूठा एक्यूज़ करके उसको अरेस्ट किया हुआ है. So he is appointed to defend Tom Robinson, a black man who falsely accused of raping Myla Ewell. She is the only daughter of Bob Ewell, who is a poor white farmer. तो ब्लैक के ऊपर एक्यूजेशन है कि उसने एक वाइट लेडी का रेप किया है. और उस समय पर तो जो ग्रेट डिप्रेशन वाले टाइम पीरियड की बात है, ये नॉवल की जो सेटिंग है, जब ब्लैक्स स्लेव हुआ करते थे वाइट्स के. तो उस समय पर
इसको एक वाइट लेडी का, वाइट वुमन का रेप के इल्ज़ाम में इसको एक मतलब उसके एक्यूजेशन में इसको अरेस्ट किया हुआ है, तो सोचो कितनी बुरी हालत में हो रहा होगा ये. सो ऑल्दो द एविडेंस क्लियरली शोज टॉम्स इनोसेंस, मतलब एविडेंस भी क्लियरली शो करते हैं. सो माइला इन्वाइटेड हिम टू हर हाउस एंड ट्राइड टू किस हिम. दिस इज एक्चुअली हैपेंड, but Bob Ewell caught them and beat his daughter to hide the shame. So Bob Ewell, who is father of Myla Ewell, actually Myla, she was the one who invited him, and she tried to kiss that black man, Tom Robinson, and Bob Ewell caught them kissing, but and beat his daughter to hide the shame. And the racist society of Maycomb refused to accept a black man's word over a white person's, right? So in court, Atticus delivers one of the most powerful speeches in American literature, arguing for truth and reality. And he says there's a line in the novel, but there is one way in this country in which all men are created equal, a court of law. So despite Atticus' defense and Tom's obvious innocence, because they have the literal evidence which proves Tom's innocence, but jury convicts Tom Robinson simply because, why? Because he is black. मतलब इतनी सारी अच्छी अच्छी आर्गूमेंट्स देने के बाद भी, मतलब एटिकस बीइंग अ गुड एडवोकेट, उसने बहुत अच्छे से केस को लड़ा, बहुत अच्छे सारे उसने आर्गूमेंट्स किए, एविडेंस भी थे जो कि टॉम की इनोसेंस को, ऑब्वियस इनोसेंस को प्रूफ कर रहे थे. बट स्टिल जूरीज ने उसी को कन्विक्ट किया और टॉम रॉबिन्सन को मतलब उसको गिल्टी उसको प्रूफ कर दिया. क्योंकि वो ब्लैक है, सिर्फ इसी वजह से. सो लेटर टॉम ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन एंड ही इज शॉट डेड. तो भाई कोशिश की उसने जेल से भागने की, फिर उसको मार दिया. एंड this whole scenario of being accused of raping a white woman, तो उसको इसलिए सिर्फ क्योंकि वो ब्लैक है इसलिए उसको सज़ा दे दी. और जब उसको सज़ा दे दी, क्योंकि वो सज़ा का हकदार तो था नहीं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो भागेगा जेल से. तो ही ट्राइज टू एस्केप, बट उसको वहीं मार दिया गया. दैट सिम्बलाइजेज द डेथ ऑफ जस्टिस इटसेल्फ. अब बात करते हैं इन बच्चों की, द चिल्ड्रन, स्काउट एंड जेम, Jean Louis Scout Finch and her brother Jeremy Finch, Jem Finch. So the Scout and Jem witnessed the deep-rooted injustice of their society. अब ये सब जो injustice हुआ है, इसका विटनेस किसने किया, मतलब डीप रूटेड इनजस्टिस का विटनेस किया इन बच्चों ने, कि देखिए सोसाइटी में क्या हो रहा है. सो जेम्स फेथ इज फेयरनेस इज शैटर्ड. जो जेम्स का जो फेथ था फेयरनेस में, कि हाँ जो सच होता है उसकी जीत होती है, जो झूठ होता है उसको सज़ा मिलती है, बच्चों को ये सब सिखाया जाता है ना बचपन में. तो जो जेम का जो फेथ था वो तो पूरी तरह से हो गया शैटर्ड. एंड स्काउट, this character, the protagonist or the narrator, she begins to understand what her father meant by moral courage. Meanwhile, there is a character, Bob Ewell, who is father of that white woman, Myla. यहाँ पे एक और कैरेक्टर है, सो शी इज़ द वाइट वुमन जिसके रेप के एक्यूजेशन में टॉम को झूठी सज़ा मिली है. सो बच्चे तो ये जो भी इनजस्टिस हुआ कोर्ट में, इससे बच्चों का जो विश्वास था जस्टिस के ऊपर, फेयरनेस के ऊपर, वो तो बिल्कुल शेटर्ड हो गया. सो बॉब वेल, ये कैरेक्टर, ह्यूमिलेटेड बाय एटिकस एक्सपोजर ऑफ हिज लाइज. तो एटिकस ने तो बहुत उसको मतलब एक्सपोज कर ही दिया था उसके झूठ में. एंड ही सीक्स रिवेंज. अब बॉब इवेल को चाहिए रिवेंज. अब वो रिवेंज में क्या करेगा, वो करता है जेम पर अटैक. मतलब बॉब इवेल, क्योंकि कोर्ट में साबित तो उसने कर ही दिया था कि बॉब इवेल झूठ बोल रहा है. माइला और टॉम दे वर किसिंग एक्चुअली, बट ही कॉट देम. और उसने अपनी बेटी को बहुत मारा क्योंकि उसका फैमिली का नाम ख़राब हो रहा था ना इससे. अब ये सारा तो उसने कोर्ट में तो प्रूफ कर ही दिया था, बट
टॉम क्योंकि ब्लैक था तो इसलिए उसको सज़ा मिली, लेकिन इसकी तो पूरी रेपुटेशन ख़राब हो गई ना, और इसी की वजह से हुई है, इसने गलत किया था। तो इसको एटिकस ने, क्योंकि ये खुद को काफ़ी ह्यूमिलिएट फील कर रहा था एटिकस की वजह से, क्योंकि एटिकस ने इसके झूठ को एक्सपोज किया था कोर्ट में। अब इसको चाहिए रिवेंज इससे, एटिकस से। तो ये क्या करता है, ये इसके बेटे जेम पर अटैक करता है। ये टेक्स जेम एंड स्काउट दोनों पे करता है। ये जीन लुई स्काउट फिंच पर भी करता है और जेरेमी फिंच पर, मतलब दोनों भाई बहन पर ये जो ये बॉब इवेल है ये कर देता है अटैक, कि इनसे बदला लूँगा मैं। सो ही अटैक्स both of the siblings one night as they return from a Halloween pageant. So at the moment, जो ये कैरेक्टर है जो इन बच्चों के लिए काफ़ी मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जो इन बच्चों का मिस्टीरियस नेबर भी है। सो जब ये अटैक कर रहा होता है इन दो पर, तभी उसी समय बो रैडली, आर्थर बो रैडली, द मिस्टीरियस नेबर ऑफ दीज किड्स, emerges from the shadows to save the children and killing Bob Ewell to in the struggle. मतलब इन दोनों को बचाने की वजह से स्ट्रगल में ये बॉब बो रैडली जो है बॉब इवेल का कर देता है मर्डर, राइट। सो शेरिफ टेट डिसाइड्स टू सेव प्रोटेक्ट बूज प्राइवेसी, कॉलिंग इवेल्स डेथ एन एक्सीडेंट। तो अब ये चाहते हैं इसको कि भाई ये बच जाए, क्योंकि इसने तो ह्यूमैनिटी के कॉज पर, मतलब बच्चों की जान बचाने के लिए ही बॉब इवेल को मारा है। तो वो इसको कह देता है कि ये एक्सीडेंट हुआ। सो स्काउट फाइनली मीट्स बू फेस टू फेस, पहली बार वो मिलती है स्काउट बू राइडली से फेस टू फेस, एंड रियलाइजेस ही इज़ नॉट अ मॉन्स्टर बट अ gentleman, and they misunderstood him. So, in a closing scene, Scout reflects on Atticus' teaching that killing a mockingbird is a sin, but it destroys innocence. तो ये जो नॉवल का टाइटल है किलिंग अ मॉकिंग तो ये तो है ही सिन। और मॉकिंग बर्ड्स कौन है, ये वो इनोसेंट लोग हैं जिनको सोसाइटी जिनको एक्सप्लॉइट करती है, जिन्हें विक्टिमाइज करती है। तो इनको मारना तो वैसे भी सिन है, लेकिन सिन तो है ही, और साथ में इनोसेंस को भी डिस्ट्रॉय करता है, राइट। अब कैरेक्टर एनालिसिस देखते हैं। So the first character is Atticus Finch. He is the moral center of the novel. He is a widowed lawyer who believes in justice, reason, and equality. He represents integrity, moral courage, and rationality in a society blinded by prejudice. He teaches his children compassion and truth. Courage, he said to his children that courage is not a man with a gun in his hand. It's when you know you are licked before you begin, but you begin anyway. So, Atticus' defense of Robinson symbolizes the fight for consciousness over conformity. The narrator of the novel is Jean Louis Scout Finch, जिसका शॉर्ट में स्काउट नाम है। वैसे इसका नाम जीन लुई फिंच है, लेकिन इसको शॉर्ट में स्काउट कहते हैं। सो शी इज़ द नरेटर एंड प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवल। शी इज़ जस्ट 6 ऑफ एज, और मतलब शुरू में ही 6 ईयर्स की थी, और बाय द एंड ऑफ द नॉवल ये 8 या 9 ईयर्स की हो जाती है। सो शी इज़ वेरी इनोसेंट, इंटेलिजेंट, आउटस्पोकन। हर ग्रोथ फ्रॉम इनोसेंस टू मॉरल अवेयरनेस मिरर्स the novel's main theme. She learns empathy, courage, and the harsh truths of human nature. Right? अगला कैरेक्टर है जेरमी और जेम फिंच. So he is her elder brother. He is idealistic and emotional. He is deeply affected by Tom's trial. जब टॉम को पनिशमेंट मिल जाती है तो इस बेचारे का जो फेथ था फेयरनेस के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, बहुत ज़्यादा शेटर्ड हो जाता है। और ये भी, इसकी एज भी बहुत छोटी है, ऑल्दो ये स्काउट का बड़ा भाई है, लेकिन फिर भी ये भी छोटा बच्चा है, और इसके मन पे बड़ा बुरा असर होता है इस चीज़ का। हिज डिसइल्यूजनमेंट रिफ्लेक्ट्स ऑन द लॉस ऑफ इनोसेंस फेस्ड बाय द यंगर जनरेशन विटनेसिंग इनजस्टिस। अब ये कैरेक्टर है टॉम रॉबिन्सन। ये एक ब्लैक मैन है जिसको रॉन्गली एक्यूज़ किया गया ऑफ रेपिंग अ वाइट वुमन। ही रिप्रेजेंट्स इनोसेंस, गुडनेस एंड द मॉकिंग बर्ड सिम्बल। तो ये एक मॉकिंग बर्ड है ये। हिज कन्विक्शन एंड डेथ एक्सपोज
द हिपोक्रेसी ऑफ जस्टिस सिस्टम। इस बेचारी की बिना किसी गलती की गलती के होते हुए भी प्रूव भी हो जाता है कि जो उस पर एक्यूजेशंस लगी हैं वो सब फॉल्स हैं, बट स्टिल इसको ब्लैक होने की वजह से इसको सज़ा मिल जाती है। और और जब ये भागने की कोशिश करता है तो इसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक्सपोज करता है कि जस्टिस सिस्टम कितना हिपोक्रेट है। सो ही वॉज अ डेड मैन, द माइनेट माइला विल ओपन हर माउथ एंड स्क्रीम्ड। सो बेसिकली माइला की जो गलती थी, वैसे तो to kiss someone is not a crime if both are it happens on the mutual concern, it's not a crime, right? But जो भी हुआ म्यूचुअल कंसर्न से हुआ था। महिला ट्राई टू किस हिम, इसने तो ट्राई भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी महिला को तो कोई सज़ा नहीं मिली। सज़ा तो इसको मिली और केस करना कोई क्राइम भी नहीं है। बट चलिए ठीक है, एक बार को आप मान भी लीजिए क्राइम है, तो ये तो इसने किया भी नहीं था। पहली बात तो क्राइम ही है ही नहीं, और इसने तो इनिशिएट किया भी नहीं था, बट बेचारे को फिर भी सज़ा मिली। तो ही इज़ द विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम, दिस जस्टिस सिस्टम, राइट? बो रैडली, जिसका पूरा नाम है आर्थर बो रैडली, ही इज़ अ रिक्लूसिव नेबर who becomes a figure of fear and fascination. He is a mysterious neighbor of Finch family. बट जब क्लाइमेक्स होता है नॉवेल में, जब जो बॉब वेल उन दोनों बच्चों को अटैक कर रहा होता है रिवेंज लेने के लिए, तो यही आता है और यही इन बच्चों को बचाता है। सो दैट अल्टीमेटली रिवील्स हिज काइंडनेस एंड प्रोटेक्शन बाय सेविंग द चिल्ड्रन। सो ही सिम्बलाइजेस मिसअंडरस्टूड गुडनेस एंड मॉरल प्योरिटी, एंड ही इज़ ऑल्सो अनदर मॉकिंग बर्ड। क्योंकि इस बेचारे को भी, ये भी फंसते फंसते बच जाता है। इसको भी मतलब इसके अगर इसके ऊपर भी एक्यूजेशन लग जाता कि इसने मर्डर किया, खैर इसने तो किया भी था, लेकिन इसके मर्डर करने के पीछे की कोई वजह नहीं देखता कि इसने क्यों मर्डर किया। लेकिन फिर भी ये भी एक मॉकिंग वर्ड है, और ये काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से अपने आप में रहता है, काफ़ी आइसोलेटेड रहता है। और कई बार ये जो बच्चे हैं ये इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें इमेजिन करते हैं, गेम्स खेलते हैं। ये फिंच, जेरमी और जीन फिंच और जो इनका दोस्त होता है डिल हैरिस, ये लोग गेम्स खेलते हैं इसके ऊपर, मतलब कुछ इमेजिनेटिव गेम्स खेला करते हैं, राइट? अब ये कैरेक्टर बॉब वेल, ये मायला का फादर है, एंड ही इज़ द नॉवेल्स एंटेगनिस्ट। ही रिप्रेजेंट्स इग्नोरेंस, रेसिज्म एंड मॉरल करप्शन, and he uses he uses racial hatred to mask his personal failure. अब एक और करेक्टर है कैलिफोर्निया, ये फिंच फैमिली का ब्लैक हाउस कीपर है। ही एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक कम्युनिटीज़, क्योंकि ये लोग तो वाइट हैं और इनका जो ये सर्वेंट है, जो इनका हाउस कीपर है, ये ब्लैक है। तो ये वाइट और ब्लैक कम्युनिटीज़ के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है ये। ही टीचेस स्काउट डिसिप्लिन, स्काउट और जेरेमी को ये काफ़ी इसने काफ़ी इन पर ध्यान दिया है। ये इनके घर का हाउस कीपर है, लेकिन इनको रेस कर रहा है, इनको नर्चर कर रहा है। ही एक्चुअली टीचेस स्काउट डिसिप्लिन, मैनर्स, एम्पैथी, यही सिखाता है, बिल्कुल पेरेंट की तरह। ये स्काउट और जेम को डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, उन्हें मैनर्स सिखाता है, उन्हें एम्पैथी सिखाता है। अब ये कैरेक्टर है डिल हैरिस, ही इज़ अ यंग फ्रेंड ऑफ स्काउट एंड जेम बेस्ड ऑन ट्रूमैन कैपोट's character. He represents childhood imagination, curiosity. His emotional reaction during the trial shows innocence confronted by cruelty, right? अब ये कैरेक्टर है मायला, ये बहुत ही माइनर कैरेक्टर है वैसे, लेकिन हाँ जो मेन इशू हुआ, जो ट्रायल चला अगेंस्ट टॉम रॉबिन्सन, वो इसकी वजह से ही चला, राइट? नाउ विल डिस्कवर द थीम्स ऑफ द नॉवल, द मेजर थीम्स। द फर्स्ट इज रेशियल इनजस्टिस। सो रेशियल जस्टिस इस नावल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेजर थीम है। द हार्ट ऑफ द नावल एक्सपोजिंग हाउ रेसिज्म डिस्ट्रॉय फेयरनेस एंड मोरालिटी। टॉम रॉबिन्सन्स ट्रायल रिफ्लेक्ट्स सिस्टमैटिक रेशियल बायस ही है, क्योंकि टॉम के पास प्रॉपर एविडेंस है कि वो इनोसेंट है। उसका जो एडवोकेट है एटिकस, वो भी इतना अच्छा एडवोकेट है, वो सारे बॉब वेल के सारे झूठ को वो एक्सपोज कर देता है, बट स्टिल
उसको सजा हो जाती है. दैट इज़ रेशियल इनजस्टिस. सो टॉम रॉबिन्सन्स ट्रायल रिफ्लेक्ट सिस्टमैटिक रेशियल बाइस एंड Harper Lee uses it to condemn social injustice in American South. The one thing that doesn't abide by majority rule is person's conscience, right? The second is moral education. So हम इन दो बच्चों की बात करते हैं, Scout and Jem. So their moral growth guided by ethicus that forms the story's spiritual core. The novel teaches that the true courage lies in moral integrity, not physical strength, right? The loss of innocence. So the mockingbird metaphor captures the tragedy of innocence destroyed by evil, right? अगर हम बात करें इस वाले की, थोड़ा सा इस पर और डिस्कस करते हैं. आई थिंक दिस इज़ नॉट सफिशिएंट. सो रेशियल इनजस्टिस जो है दैट creates prejudice as well. So at the heart of To Kill a Mockingbird that lies powerful condemnation of racial prejudice in the American South America, right? The trial of Tom Robinson, who is a black man, and he is falsely accused of raping a white woman, that becomes a moral mirror reflecting the deep injustice and hypocrisy of Maycomb society. Despite clear evidence of Tom's innocence, all the white jury convicts him, not because of facts but because of his race, his color, because he is black. So Harper Lee reveals that racism is not merely personal bias but a social disease that rooted in law, custom and fear, right? So Atticus Finch's defense of Tom Robinson becomes symbolic of moral resistance against the collective evil of prejudice. Yet the tragedy of Tom's death shows how legal equality fails when society itself is unequal, right? So racism is in To Kill a Mockingbird is not limited to individuals. It's institutional and cultural. The courtroom becomes a stage where a moral collapse of an entire community is exposed, right? The second is moral education. So Harper Lee redefines morality and courage. It's not physical bravery but the moral strength. In a society that is filled with hatred and conformity, Atticus Finch stands as the moral conscience of Maycomb. He knows that defending the Tom Robinson will bring ridicule and danger to his family. Yet he does it because it is right, not because of its popular, right? So similarly, Mrs. Dubose, an old morphine addict, there is one more character, Mrs. Dubose, an old morphine addict, fights her addiction before death. So Atticus uses her struggle to teach Jem that courage is persistence in the face of defeat. So moral courage in the novel's highest virtue. Moral courage is the novel's highest virtue, the ability to act on conscience even when society disagrees. So it is the only weapon against collective injustice, right? The third theme is loss of innocence, that is about coming of age. So the novel, in essence, a Bildungsroman, a coming of age story through the eyes of Scout Finch and her brother Jem. Harper Lee depicts a painful but necessary process of moral awakening in a world marked by prejudice and cruelty. At the beginning, both of the siblings live in an innocent world of childhood. They play games, they do imagination, they are very curious to know about Arthur Boo Radley, right? But the events of the trial and the quality of the townspeople destroy their innocence and force them to confront harsh realities. So after witnessing injustice, Jem realizes it's not right to do something that way. And when Scout finally meets Arthur Boo Radley, she truly understands Atticus' lesson that goodness is often silent and misunderstood, right? So loss of innocence does not mean the loss of hope. Through this journey, the children learn compassion, empathy and moral courage, and they value the divine human maturity, right? The fourth theme here is empathy and understanding. So this is the central moral theme of the novel, the idea that human understanding requires compassion.
It is best expressed in Atticus' famous advice. In the novel, there's an advice from Atticus to his children. You can read in the novel. You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around it. ये लाइन बहुत ईजी है, आप चाहे तो इसको याद कर लीजिए, और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अगर वहाँ ये लाइन को लिखेंगे, एटिकस का डायलॉग है ये, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस अपने आप बन जाते हैं. सो थ्रू आउट द नॉवल द मेन कैरेक्टर, द नरेटर स्काउट, learns to apply this lesson. She understands why her teacher struggles. She sees Arthur B. Radley's kindness behind his silence. She learns to forgive people like Mrs. Dubose and Marilla Ewell. At the end, when Scout stands on Boo Radley's porch, she literally sees the world from his perspective, fulfilling Atticus' moral teaching. So, empathy is presented as the foundation of justice. Only through understanding others can prejudice and hatred be overcome. Right? The fifth theme is good versus evil in human nature. So, there's a coexistence of good and evil. Harper Lee presents human nature as a blend of light and darkness. Right? Even the best people like Atticus or Miss Maudie live in amidst corruption and cruelty. So the town of Macomb, it's so through the experience of the Finch family and the citizens of Macomb, Lee shows that evil is not always monstrous and obvious. It often hides behind normality and tradition or fear. So the novel therefore becomes a moral investigation into how goodness survive in a world that often rewards cruelty and prejudice, right? So we'll discuss the sixth theme of the novel, the gender roles and expectations. So To Kill a Mockingbird also explores how gender expectations shape identity in the traditional Southern society of 1930s. Through Scout Finch, Harper Lee questions the rigid definition of femininity and challenges the idea that girls must behave in ladylike ways to be accepted. Scout is curious, outspoken, and prefers playing with boys instead of wearing dresses or learning manners. Her behavior clashes with Aunt Alexandra's traditional view of womanhood, which emphasizes grace and social decorum. Right? Yet Atticus encourages Scout's independence and critical thinking, teaching her that characters matters more than convention. Right? So there are many characters of women of Macomb represents different types of femininity. जैसे एक character है यहाँ पर Aunt Alexandra. She is traditional and socially conscious. एक है Miss Maudie. ये है इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है और कंपैशनेट है. एक है कल्फोर्निया जो कि ये क्या है, ये हाउस कीपर है ना इनकी फैमिली में. सो शी इज स्ट्रॉन्ग, डिग्निफाइड एंड नर्चरिंग. सो ईच वुमन इन्फ्लुएंस्ड Scout's understanding of what it means to be lady. So through Scout's voice, Harper Lee subtly criticizes the limitation of imposed on women and celebrates authenticity and empathy and moral courage as the true marks of womanhood. So, Scout's growth shows that being a lady does not mean obedience, it means understanding oneself and others with dignity and strength. Right? Now, we'll discuss the symbols and motifs of the novel. The first is mockingbird. So the central symbol representing innocence and harmless. Mockingbirds don't do one thing but make music for us to enjoy, and harming them is symbolic of punishing goodness. So in this novel, Tom Robinson and Arthur B. Radley, they are both mockingbirds. They are innocent victims of society's prejudice and misunderstanding. The second symbol is rapid dog. When Atticus shoots the mad dog, it symbolizes the fight against the madness of racism, which is irrational, dangerous, and contagious in society. The camellias, the flowers, Mrs. Dubose flowers. So the camellias represent moral courage and forgiveness. Atticus makes Jem read to Mrs. Dubose to teach him that real bravery means fighting personal battle with dignity, not hatred.
The tree and gifts. The items left by Arthur Boo Radley in the tree symbolizes communication, connection, and the silent kindness in a world of misunderstanding. The fifth is courthouse. So, courthouse symbolizes justice as well as its failures. It's a place meant for truth, but it was corrupted by human prejudice, right? So, this novel is a first person narration by a child who is Jean Scout, gives innocence and authenticity. Southern Gothic elements are there in the novel. That is small town setting, decaying moral order, eccentric characters. There are many realistic dialogues and regional dialect true to Alabama's speech. Moral symbolism is very much there, blended with social realism. There is humor, warmth that balances serious themes. So mock, to kill a mockingbird, this novel is not only a story about racial justice, it's a moral fable about human decency, empathy, and importance of conscience. Through the eyes of Scout Finch, Harper Lee shows that true bravery lies in compassion and that the fight of justice often begins quietly in the heart of individual who refuses to hate. So Harper Lee's masterpiece continues to inspire readers' worldview, reminding us that the path to justice begins with understanding, and that the most powerful weapon against prejudice is empathy. Right? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. वैसे मेरे पास हमेशा ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सबको यहाँ डिस्कस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसीलिए हम सारे नहीं पढ़ेंगे. मैंने सिर्फ 4 बेस्ट क्वेश्चंस लिए हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ कंप्लीट एंड ऑथेंटिक आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी लेक्चर इन इंग्लिश विच कवर्स all the 4 questions one by one, right? So the first question is, analyze the significance of Harper Lee's title To Kill a Mockingbird and its relevance to the novel's theme. So the question demands both symbolic and interpretation and the thematic connection. When writing, follow this clear structure. So the structure is, सबसे पहले रहेगा introduction. So in introduction, you need to briefly mention the origin of title and its symbolic meaning. In the main part, you need to identify the mockingbirds in the novel. Who are the mockingbirds? Tom Robinson, Boo Radley, and many more. And you need to connect the symbolism to the central themes, which are innocence, moral conscience, and social justice. And in conclusion, you need to emphasize how the title represents the moral heart of the novel. So in this part, you need to discuss the title. To Kill a Mockingbird is deeply symbolic. In the novel, Atticus Finch tells his children, shoot all the blue jays you want. If you can, hit them, but remember, it's a sin to kill a mockingbird. तो ये आपको नॉवल में भी मिल जाएगा. Here mockingbird symbolize innocence, purity, harmlessness. They don't do one thing but make music for us to enjoy. So killing a mockingbird therefore becomes a metaphor for destroying innocence through cruelty, prejudice, and misunderstanding. अब who are the mockingbirds in the novel? ये है जैसे टॉम रॉबिन्सन है. ही इज़ अ ब्लैक मैन falsely accused of raping a white woman. He represents innocence and goodness which is destroyed by racial injustice. His wrongfully conviction and death embody the killing of a mockingbird. The second is Boo Radley. So he is a reclusive neighbor misunderstood by society. Despite being feared and ridiculed, he saves Scout and Jim. The townspeople gossip and fear kill his innocence emotionally. There are two more mockingbird in the novel, that is Scout. Scout and Jim, these are childhood innocence, so their confrontation with evil during Tom's trial symbolizes the death of moral purity as they learn the world's harsh truths. So ये जो अब थीम्स की बात भी यहाँ पर करनी है, तो वी नीड टू
you need to use these points and their connection to the themes. देखिए, इनोसेंस वर्सेस इविल एक थीम है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, एक थीम है इस नॉवल का, इनोसेंस वर्सेस इविल. सो सोसाइटीज प्रेजुडिस हार्म्स प्योर एंड गुड हार्टेड पीपल. There is one more theme of the novel, that is empathy and moral conscience. So that recognizing the humanity in others that prevents metaphorically killing of mockingbirds. One more theme is there, justice and compassion. So the novel's title warns against moral blindness. So the title captures the moral essence of Harper Lee's message that true justice and morality lie in protecting the innocent and voiceless. Thus, the act of killing a mockingbird is a warning against cruelty born of ignorance and prejudice, right? आप इसमें कुछ की फ्रेजेस को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि इट्स अ किन टू किल अ मॉकिंग बर्ड. ये एक लाइन है जो कि एटिकस बोलता है. मॉकिंग बर्ड डोंट डू वन थिंग बट मेक म्यूजिक फॉर अस टू जॉय. ये भी एक लाइन है. इनोसेंट डिस्ट्रॉयड बाय इविल इज द नॉवल सेंट्रल ट्रेजेडी. आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस टू किल अ मॉकिंग बर्ड एज कमिंग ऑफ एज नॉवल considering its depiction of scouts emotional, social and moral growth, right? So this is a Bildungsroman question. Coming of age की बात हो रही है यहाँ पर. So focus on scouts development from innocence to understanding, shaped by experience, family values and social realities. So structure जो इस आंसर का वो यही होगा. इंट्रोडक्शन में you need to define the coming of age. You need to define this term coming of age and relate it to Scout as a narrator. In the main part, you need to define her growth into emotional, social and moral aspects, and in conclusion you need to show how her journey mirrors the novel's moral vision. So इस पार्ट में इंट्रोडक्शन में आपको ये कमिंग ऑफ एज को डिस्कस करना है. दैट अ कमिंग ऑफ एज नॉवल ट्रेसेस द साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ ऑफ अ करेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी. सो टू किल अ मॉकिंग बर्ड इज नरेटेड बाय स्काउट फिंच who begins as a naive 6-year-old girl, and she gradually learns about human satire, empathy and justice. This is about her emotional growth, right? इसकी इमोशनल ग्रोथ की बात करेंगे मेन पार्ट में. दैट स्काउट बिगिंस द नॉवल केयर फ्री, मिस्चीवियस एंड इम्पल्सिव, जैसे एक छोटा बच्चा होता है बिल्कुल वैसे ही. शी ऑफन रिएक्ट्स विद एंगर व्हेन प्रोवोक्ड, स्पेशली व्हेन अदर्स इंसल्ट एटिकस. बट एज शी ग्रोज शी लर्न्स सेल्फ कंट्रोल, compassion, through her father's example. By the end, she understands that people are often victims of their own fears and arrogance. Right? तो ये तो था सोशल इमोशनल ग्रोथ, कि वो कैसे उसने नॉवल को कैसे शुरू किया और बाद में वो कितनी ज़्यादा उसने अपने आप को मतलब एज शी ग्रोज शी लर्न्स सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन थ्रू हर फादर्स एग्जाम्पल. राइट? अब सोशल की अगर हम बात करें, ये भी मेन पार्ट में ही आएगा. सो स्काउट्स इंटरेक्शंस एट स्कूल एंड इन मेकॉम टीच हर अबाउट क्लास, gender and racial divisions. She learns that the world is not fair and that adults often live by hypocrisy. Through Calpurnia and church visits, she gains awareness of racial inequality, because Calpurnia is the only one who works as a bridge over this gap of blacks and whites, right? And uh, Scout also learns the expectations of southern femininity but remains true to her independent spirit. अब हम बात करते हैं मॉरल ग्रोथ की. सो एटिकस इज स्काउट्स मॉरल कंपास. ही टीचेस हर एम्पैथी. Once he said to her that you never really understand a person until you climb into his cane or walk around it. So through Tom Robinson's trial, she witnesses injustice firsthand. Her experience, and in the other, there's one more incident. Uh, Her experience with Mr. Arthur Boo Redley, that complete her moral awakening. She realizes that goodness can exist even in silence and misunderstanding. So Scout's journey from innocence to awareness reflect the moral education of humanity itself. So through her
Through this character, Harper Lee shows that true maturity means seeing beyond prejudice and practice empathy, right? Now, the third question is: To Killing a Mockingbird highlights the importance of fair trial through the Tom Robinson's case, illustrating the devastating consequences of racial bias and in the justice system. Discuss. So, this is a theme based legal and moral question which analyzes both the trial and its symbolic implications, right? So यहाँ पर हमें कुछ 3 से 4 चीज़ों पर फोकस करना है. So we need to focus on the concept of justice, so and the racial prejudice, the moral failure of society, and ethics, integrity as the voice of fairness. So through these points we can write an answer. In introduction we can state the novel's moral context, that is racial injustice in 1930s South America, and in body you can describe Tom Robinson's trial. आप पूरा उसका एक उसमें 5 to 6 लाइन्स उस बारे में लिख सकते हैं, जो कि हमने पहले वाले आंसर्स में डिस्कस किया टॉम रॉबिन्सन के ट्रायल के बारे में. एंड शो एविडेंस ऑफ रेशियल बायस एंड इट्स इम्पैक्ट. मतलब टॉम रॉबिन्सन के सपोर्ट में प्रूफ्स थे, एविडेंस थे. एंड एटिकस एक्सपोज द लाइज ऑफ बॉब इवेल, स्टिल ही गॉट कन्विक्टेड, राइट? तो आप वो यहाँ लिख सकते हो. एंड यू नीड टू डिस्कस Atticus' defense and moral stance, and in conclusion you can conclude these points, and you can reflect on how the miscarriage of justice becomes Harper Lee's critique of society. So the trial of Tom Robinson forms the moral and emotional core of To Kill a Mockingbird. Through it, Harper Lee exposes how systemic racism corrupts the legal system, making fairness impossible in a prejudiced society. So Tom Robinson, who is a hard-working, kind black man, is accused of raping Myla Ewell, a poor white woman. Despite overwhelming evidence of his innocence, all white jury convicts him because of his trial. अब एटिकस के डिफेंस की भी आप यहाँ बात लिख सकते हैं. सो इसमें आप लिख सकते हैं कि एटिकस रिप्रेजेंट्स ट्रुथ, लॉ एंड कॉन्शियंस. His defense is based on evidence and logic. Myla initiated the encounter. Her injuries came from her father, not from Tom Robinson. Tom crippled arm makes the accusation impossible. So Atticus delivers a speech that embodies the ideal of justice. But in Maycomb, racial prejudice overweighs truth. So you can write about racial justice and hypocrisy. In the trial reveals that the legal system reflects the societal racism, not moral law. The jury's verdict, guilty despite proof of innocence, which shows that justice is blinded not by law, by the color. So even after the trial, Tom's attempt to escape and his death signify how hopeless justice is for the oppressed. So Tom Robinson is a mockingbird figure in the novel who is innocent, kind, and destroyed by evil. His death symbolizes the killing of goodness by prejudice. The trial also serves as a moral test for the children. Jem and Scout lose their innocence as they witness the injustice. So through Tom Robinson's case, Harper Lee shows that law without equality becomes cruelty. It becomes cruelty, and that prejudice can kill both the innocent and society's moral conscience. The novel remains a timeless call for fairness, empathy, and truth. Right? Now we'll discuss the last and fourth question for this class. You really never understand a person. देखिए ये लाइन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको हर आंसर में ऑलमोस्ट इन एवरी आंसर आई suggest this line to you to write in your answer. ये यहाँ पर भी आ गई. You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around it. आप समझ सकते हैं इस लाइन की क्या, इस लाइन की एक्चुअल में काफ़ी इंपॉर्टेंस है. So why does this line from the crux of the novel? तो ये लाइन क्रक्स क्यों माना जाता है नॉवल का? So the question tests philosophical understanding of the novel's core moral message, which is empathy.
So explain the line, then show how it applies to multiple characters and situation. So in introduction, you need to identify who says it and why it is important. तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन कही किसने और क्यों इम्पॉर्टेंट है. इन द मेन पार्ट यू नीड टू डिफाइन द एम्पथी एज अ मॉरल अंडरस्टैंडिंग. यू नीड टू शो हाउ दिस कोट applies to Scout, Boo Radley, Tom Robinson, and Atticus. And in conclusion, you need to explain how empathy transforms perception and represents a novel ethical foundation. So, this line is spoken by Atticus Finch. और किससे कही थी? स्काउट से कही थी. मतलब एटिकस फिंच ने अपनी बेटी जेन लुई स्काउट फिंच से ये लाइन कही थी इन द वेरी अर्लियर टाइम ऑफ नॉवल के बहुत शुरू में ही ये लाइन कह दी गई है. अगर आपके पास नॉवल है तो आप ढूंढ सकते हैं, आपको ये लाइन मिल जाएगी. बिल्कुल शुरू में ये लाइन स्काउट से उसके फादर एटिकस फिंच ने कही थी. आफ्टर शी स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड हर टीचर्स बिहेवियर, राइट. सो इट कैप्चर्स द, देखिए मैंने यहाँ पूरा बता दिया कि लाइन किसने कही थी, किससे कही थी और क्या सिनेरियो था जब ये लाइन कही थी. व्हेन शी स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड हर टीचर्स बिहेवियर, राइट. This line captures the essence of Harper's Lee's moral philosophy, that is empathy. So empathy is the foundation of justice and humanity, right. So यहाँ पर आप कुछ points को add कर सकते हो. So the first point is empathy is a moral vision. Atticus believes that moral growth begins with understanding others, especially those different from ourselves. He applies this principle throughout the novel. He defend Tom Robinson despite social disapproval के बाद भी वो सबके अगेंस्ट जाके, अपनी वाइट कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके उसने टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड किया कोर्ट में, जबकि वो खुद भी वाइट था और एक वाइट वुमेन के अगेंस्ट ही केस लड़ रहा था. बट स्टिल उसने सच का साथ दिया और वो टॉम रॉबिन्सन को उसने डिफेंड किया. इसकी वजह से उसको और उसके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और झेलना पड़ा. Teaching Scout to understand Bo Radley instead of fearing him, right? And treating everyone from Calpurnia to Mrs. Dubose with dignity. So this is about empathy as a moral vision, which Atticus applies this principle throughout the novel. Second is Scout's journey of understanding. So at first, Scout judges people by appearance or rumor, right, like Bo Radley or Mrs. Dubose. पहले वो दोनों कैरेक्टर्स को उनकी अपीयरेंस और उनकी जो र्यूमर्स जो उनके बारे में बातें फैलती थी, मतलब र्यूमर्स सुनी सुनाई बातें जो होती थी उन पर बिलीव करती थी स्काउट, बीइंग अ 6-year-old चाइल्ड. बट बाय द एंड शी लर्न्स टू सी पीपल थ्रू देयर कंपैशन. सो व्हेन शी फाइनली मीट्स बू एंड वॉक्स हिम होम, शी लिटरली स्टैंड्स ऑन हिज पोर्च, symbolically in his skin, right. So the third is connection to the mockingbird symbol. So empathy prevents the killing of mockingbird. When we understand others' pain, we stop harming the innocent. Without empathy, prejudice, hatred, and injustice thrive. Right? Without empathy, prejudice, hatred, injustice thrive. The fourth is Atticus as a moral educator. Throughout the novel, Atticus' teachings shaped not only Scout's consciousness but the novel's entire ethical world. Through him, Harper Lee also advocates a vision of society grounded in understanding rather than judgment. So this line forms the moral and thematic center of to kill a mockingbird. This line represents Harper Lee's faith in human empathy as a path to justice and the ability to climb into another's skin, transform the world from a place to prejudice to one of compassion, right. तो यहाँ पर आप बहुत सारे इस लाइन के अलावा भी और भी बहुत सारे फ्रेजेस यहाँ यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि एम्पैथी इज़ द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी, अंडरस्टैंडिंग रिप्लेसेस जजमेंट, व्हेन वी सी थ्रू अदर्स आइज प्रेजुडिस डाइज. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. सो इसी के साथ ये क्लास भी ख़त्म होती है. सो एज वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन, let's reflect on the timeless message of Harper Lee's To Kill a Mockingbird. It's a novel that reminds us that justice begins with empathy,
courage, which is measured by conscience, and true education lies in learning how to understand others. Through the eyes of young Scout Finch, Harper Lee teaches us that even in a divided world, kindness and moral clarity can still shine through prejudice and fear. If you found this discussion helpful and insightful, then please don't forget to like this video, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel for more detailed lectures on literature and answer writing strategies. Your support helps this learning community to grow and keeps quality educational content coming your way. Thank you for watching. Keep learning, keep questioning, and above all, keep reading great literatures.